नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज सोनिया मेहता आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका स्वागत है आंटी। मैं गलतराम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मल्टी लिंग्विंग इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी संगत साथ में जुड़ी हुई है गुरु परिवार की, सबको जय गुरु जी। आप किसको मानते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप मानते हैं ये बड़ी बात है। क्योंकि जब हम कहीं मानने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सकारात्मकता कहीं ना कहीं उसका बीज पड़ा हुआ है। और उसमें अगर आपका आस्था भाव और श्रद्धा अगर आपको उसमें पढ़ना शुरू हो जाता है तो वो भरोसे की तरफ चल निकलता है। और भरोसा ही है जो आपको मालिक से मालिक तक ले जा सकता है। और वही कहीं ना कहीं भरोसा है हमारी पिछली जो जो भी कोई पूजा पाठ रहा है, जो भी पिछले जन्मों के हमारे कोई कर्म रहे हैं जो गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लिया। और वही भरोसा जो गुरुजी ने हम पे दिखाया है अपनी शरण में लेने के लिए कि वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। वो तो चाहते हैं कि अब हम भी चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी जो सत्संग कराते हैं सत्संग से वही है कि हमारी जिंदगी की हमारे मन मस्तिष्क में जो नकारात्मकता जो भरी हुई है उसको निकलने के बाद एक स्पेस जो बनता है वो सकारात्मकता बनता है। और जब आपका सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तो आपके जन्म भी अच्छे होंगे। तो ये सब एक गुरुजी ने ऐसा वो किया हुआ है, परिवार इकट्ठा किया हुआ है जिसके बीच में कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो आपको एक दूसरे से प्यार के अलावा कुछ करना सिखा सके। यदि हम उस पथ पे चल निकले जिस पे गुरुजी चाहते हैं, और जो गुरुजी देने के लिए आए हैं और जो देना चाहते हैं, अगर उसकी ओर अग्रसर सारे हो हम, तो आपस में कोई मनमुटाव कोई टकराव कुछ होने की स्थिति नहीं होगी। और ये कहते हैं कि गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। उनकी महिमा का बखान करना या उनकी उस तक पहुंच पाना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बस में नहीं है। तो हम तो एक आम है जिसका इतना ना सोच है ना अप्रोच है ना उतना हमारा अध्यात्म का पूंजी है हमारे पास में कि हम उनको बखान कर सके। लेकिन वही है कि गुरुजी की महिमा तो गुरुजी जाने। जिस बरसे गुरु कृपा वही बखाने। जिस जिस संगत पर जिस जन पर गुरुजी की कृपा बरसती है, गुरुजी के साथ रहकर जो गुरुजी का एक्सपीरियंस होता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए, किन कष्टों से किन परेशानियों से कितने सहज रूप से गुरुजी ने हमें उससे उबार दिया और एक मौका दिया है कि जो जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उस जन्म की उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मौका दिया है कि एक सतगुरु जो गुरुओं को गुरु है, देवों को देव महादेव है, देवों को देव है, वो सब एक जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर जो है, ना उनसे कोई ऊपर है ना उनसे कोई आगे है। तो जो सबके सबके उसमें है, जब वो साक्षात गुरु रूप में जो है ना हमें उनका अपने सिर पे हाथ मिल चुका है, उसके बाद भी अगर हम इस जन्म को उस काम में न लगा पाए जिसके लिए ये जन्म हुआ है, तो फिर तो पता नहीं कितने जन्म और बीतेंगे। वो जो शब्द में है कि बहुत जन्म बीते माधो, तो वो जन्म तो बीतते ही जाएंगे और पता नहीं पीछे कितने हम जन्म बिता के आए हैं। लेकिन गुरुजी जो साक्षात गुरुजी की संगत, चाहे वो 31 मई 2007 से पहले रही हो, चाहे उसके बाद जो जुड़ रहे हैं, वो एक माला में पिरोए हुए मोती हैं और सबको जोड़ के ही एक माला का स्वरूप बनता है। तो कोई पहले कोई बाद में, लेकिन नया पुराना कुछ नहीं है, सब साथ में ही है। लेकिन एक हम जो दुनियावी समय का जो चक्र में हम घूमते रहते हैं, तो हम उसमें नया पुराना अपना लेके चलते हैं। आज हमारे बीच में सोनिया मेहता आंटी जी हैं जो गुरुजी की संगत में उस समय जुड़े जब गुरुजी साक्षात चोले में थे। तो मैं चाहता हूं
कि वो अपने उन एक्सपीरियंस को, अपने उन भावों को संगत के साथ जो है ना शेयर करें, जिससे कि जो आने वाली संगत है, जो जुड़ने वाली संगत है, जो जुड़ी हुई संगत है, उसको अपने भाव में, अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में और भरोसे में जो ना वो पुख्ता हो। और जो समर्पण का जो भाव, जो जो अंतिम सत्य है कि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक जो है ना आपका कल्याण भी नहीं होना। तो इसलिए उस तक जाने का एक जो रास्ता गुरुजी ने सत्संग के रूप में रखा हुआ है, उस सत्संग की धारा को आगे प्रवाहित करें और संगत को कृतार्थ करें। जय गुरु जी। सोनिया मेहता आंटी जी। जय गुरु जी अंकल, आपने इतने अच्छे शब्द बोले हैं, थैंक यू, और सीख भी दी है आज। यू नो देयर इज इंस्टेंट connectivity when we hear Guruji's blessed Shabad. And it kind of transports you to Guruji's Darbar in Empire State. Jai Guruji Sangat Ji. Guruji, our प्यारे Guruji, unka noor, glow was so mesmerizing. Guruji is so kind, loving. Unki smile, just divine, just reflecting pure love. I feel very blessed that I reached Guruji's Darbar in Empire State, and also in deep gratitude. Of course, as they say, unki agya ke bina koi unke paas nahi pahunch sakta. Or aaj bhi, it is true that without his permission, without his ichha, कोई बड़ा मंदिर के अंदर नहीं जा सकता या सत्संग में नहीं पहुंच सकता. I went to Empire State in 2005. Sangaji, your Tirath starts when you express desire to go to Bade Mandir, or the desire arises in you. This is more for those who stay outside India. Believe me, it will happen. That Tirath, like pilgrimage, kind of starts then. It will happen in his time, but happen it will. Also, when you leave your home for a satsang, your journey begins when you actually leave your home, and it ends when you return home. Guruji used to say, apni blessings leke ghar jao, directly ghar jao. His protection is with you. Guruji कहते थे, मैं अपनी संगत ਨੂੰ ਤੋੜ तक ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ. So next time you leave home, Sangatji, be careful what you're talking on the way till you reach the place for satsang and on your way back. Of course, Guruji knows every time, but especially so when you are going for a satsang and returning from there. It's not over till you're home. First time when I bowed to Guruji, it was in, I think I just mentioned, I went to Empire State in 2005. And first time when I bowed to Guruji, among other things, he asked me, Auntie, Tennu ki chahiye? Because I was about to tell him something about my mother, and he waved his hand and said, Tennu ki chahiye? As if in me, what do I want? Looking straight at me. I remember saying, Guruji, aapka ashirwad. Guruji smiled and said, Ja baja, langar kha ke jai. In those few seconds, all thoughts that flashed in my mind appeared too small, too worldly to say in front of Mahapurush. Because one thing I knew, I instinctively knew that I had come home. No if, that's it. No if, no but. It's just that feeling
I've come home. This is it. This is what I was searching, or my soul was searching all this while. I didn't know. I mean, that evening after Shabbat and before langar was served, Guruji beckoned me and said, "Das ki gal hai?" I told him about my mother being very unwell. He asked, "Photo hai?" I said, "Haan ji." Guruji held mummy's photo in one hand, and with the other hand, forefinger, he tapped on the photo, nodded his head, and gave it back to me and said, "Langar kha ke jai." Again. I said, "Haan ji, Guruji." By then, the Sangat was already sitting in parallel lines, ready for langar. Chataइयाँ बिछ चुकी थी और संगत बैठी हुई थी, for the langar thali, to a thali in that way. And I got a place right next to Guruji's chair, Gaddi. And when it was time to take Agya, Guruji asked me, "Langar khada hai?" I said, "Haan ji, Guruji." And Agya leke, and I turned and I was very puzzled. I said, "I've been right in front of Guruji I had." But later I realized Mahapurush says something only 3 times, either to instruct or to emphasize a point. Guruji was emphasizing the importance of langar. That trip itself, on another evening, when I was taking Agya, he asked, "Kadon ja rahi hai?" I was staying in Middle East. So, that's why he asked me that. And I had already told him earlier. I said, "Shayad agle hafte." He lovingly said, "Andi rakar." I was told later it meant admission ho gayi. Sangat ji, I felt so happy. Even before knowing this, I felt so happy because he had said it so lovingly. And after I came to know, it made me feel more happy and totally grateful, absolutely grateful. In my next visit to Delhi, I went straight to Guruji's Darbar to thank him. And as I said, "Thank you, Guruji, Mummy is absolutely fine." And recently went for a family vacation to Masuri. Sangat ji, Guruji actually blushed and gave a shy smile and looked down, kind of sideways. I cherish this beautiful memory of him smiling shyly. Guruji used to say, for Delhi Sangat especially, "Kam kara janden, thank you, we nahi karan aande." I'm happy I did something that made Guruji happy. I'm so grateful. It's a beautiful memory. And Sangatji, my mother lived for exactly 5 years more. This realization came to me much later, sometime in 2016. And that whole scene flashed in front of my mind. And when Guruji was tapping the photo, and I realized he had tapped it 5 times. And my mother lived exactly 5 years more in a very healthy state. She just fell sick one day, and that's it. Who can do this? Only God, Rab. Guruji is Mahashiv. Just yesterday, we heard in Satsang by Chauhan Aunty. I'd heard this Satsang before, but it makes more authentic. It gains more authenticity when you actually hear it from person in whose presence it happened. And when he said that 3 very tall men had come, and they seemed a little unique and who had bowed in front of Guruji. And later, after they left, Guruji asked, "Pata hai kaun hai?" And Guruji said, "Brahma, Vishnu, Mahesh. Mainu namaskar karana hai si." Sangatji, that says it all. On satsangs are many, but I will just say the ones that I've shared some earlier, but this I would definitely like to share. One of end April 2000.
7, during Agya, Guruji asked me and my uncle to stay back. Later, I told Guruji that my daughter's wedding date had been fixed for June, as suggested by the boy's family. So Guruji paused and then said, Karlo. Then he said, looked at me and said, date na change kare. And a few seconds later, he leaned forward and again said very firmly, date na change kare. I said, theek hai Guruji. And I also, with folded hands, requested Guruji to, for him to grace the wedding. But Guruji said, main nahi hovanga. I thought, Guruji is going to Punjab. Sometimes he did. So I said, please, Guruji, ek do din aage piche kar lo, meaning adjust kar lo. And he said, "I ho nahi sakta. Hun nahi ho sakta." I mean, how could one ever imagine or think what Guruji was trying to convey? As I'm saying this, my hands are getting cold. I remember saying, I will come again, Guruji, and give wedding card. He said, koi lord nahi, daste deta hai. That evening is deeply etched in my mind. Uncle was sitting next to Guruji's gadi, and I was about 3 feet away in front of Guruji. Guruji was leaning to left side, having a long conversation in Punjabi, Thet Punjabi with my uncle. I could understand a few words which my uncle was saying, not what Guruji was saying. He used to speak very fast and very Thet Punjabi. I mean, I can understand Punjabi, I speak to, but not at that level. And I was, in fact, just happy, watching them. So Guruji gave Agya around 2:30 a.m. And in Empire State, before exiting, there are 2 steps. So I was at the first step, and I just don't know what made me. I turned to my left. Just then, Guruji was walking diagonally from his chair. He had also got up. He was walking diagonally from his chair to his room. And at that instant, he turned and looked at me. Sangatji, it was an electrifying moment. I know Guruji held my hand at that moment. And he's still holding it. Shukrana, Guruji. Anantam Shukrana. Guruji has later given so many dream darshans, sakshat darshan. जब मेरे हाथ में उन्होंने कुछ पकड़ाया था और ओझल हो गए थे, in front of बड़े मंदिर के गेट के बाहर, just outside. And दोपहर के टाइम, this was in 2012. हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई है गुरुजी ने, हिम्मत बढ़ाई है. I'm blessed to witness Amrit Varsha in Bade Mandir in 2011 and in Dugri in Feb 2019. In Bade Mandir, I think in 2012, 13 maybe. I had distinct darshan of Guruji in 2013. I had distinct darshan of Guruji in the Akhand Jyot kept near Samadhi. पहले तो वो ग्लास डोर के पीछे होती थी, अब बाहर है अखंड ज्योत. एंड इसमें माथा टेका और ऊपर जब देखा तो क्लियरली गुरुजी स्वरूप ज्योत में दिखा, क्लियर. एंड देन लाइक अ स्लाइड शो, few seconds later Guru Nanak ji, and then few seconds later Sai Baba.
I really thought I was hallucinating. I got up and मैंने बाहर से, from outside, I did parikrama of Samadhi, came back, bowed my head, looked up. Again, I saw then only Guruji in the Sarup that we can see now, so-called rock star Sarup of Guruji. Shukrana Guruji. In September 22, last year, I had a dream darshan of Guruji between about 4:30 a.m., between 4:30 and 6 a.m. In the dream, I remember entering a hall. It's a big hall. It's kind of like a huge drawing room. And there's from the main door, there's a big sort of an empty, kind of a corridor, because there are sofas on the right and there are sofas on the left. And on the right-hand side, there's a sofa. I'm entering it with my son. And on the right side, the sofa, and there's somebody sitting. And suddenly I look again and I realize it's Guruji. And I tell myself, Guruji bethe. And he had just picked up something outside. So I told him, go quickly wash hands and come. So he goes towards washing hands. And I quickly go to in front of Guruji and I bow down. I the matha tekti hu. And Guruji apna juti pehni hoti hai. He's wearing a brown trouser and a striped shirt. And वो अपना पैर, लेफ्ट पैर जूती से बाहर निकालते हैं and मेरे आगे कर देते हैं. As if to say, I sense that he's saying दबाने के लिए. So I put one foot below his, I cradle his left foot in my hand, and with the other hand I start pressing. And then in about few seconds, he lifts his trouser, raises it up to his knee, and then looks at me. So it's like, but I don't want to let go of his foot. So I keep cradling that. And with the other hand, I press the leg, left leg. And I also start realizing that my son hasn't come till now. And I look towards Guruji, and he's, of course, Guruji has understood. He can read your mind. He can read what you're talking about. He knows what you're saying back home. I mean, maybe 100 kilometers away or anywhere. And he just, twists his hand in the air like this, as if to say, Manmoji aa jayega. And that is another satsang. That I guess my son will share it when he can. So this happens, and it's and I keep, I can still feel it. I mean, I can still feel the sensation of holding Guruji's foot, the softness of his skin, and, unka sparsh. It's such a beautiful feeling, so real. Even now I can, feel that. So when I woke up, I immediately did mantra jap and Shukrana. Sangaji, I had a regret, a desire all these years that I never got an opportunity to press Guruji's feet or hand or even touch him. I used to, go and sit at the back, basically quite shy. So, but see how beautifully he fulfilled this khwash. This is our Guruji, our loving, caring Guruji. But there's another element to this, I realized only this year in January, because in November, I had gone to Bangalore. I remember 5th November. And that night, I had excruciating pain in my left leg, in the calf area, like about 3-inch by 2-inch area. Just there. Never spread, never nothing, just contained in that area. Morning, it had escalated to level of 9.5 on a scale of 1 to 10. It was extremely excruciating. I could return only on 7th after painkiller injections, etc., but still in pain at the level of 7. As I landed, I met my doctor. He put me on complete bed rest, and then the tests, etc., started. Nothing showed up.
Finally, PET scan was also done. Nothing. It was in December, around beginning third week. Suddenly the pain went. There was no pain. Reason still unknown. It was a very strange episode. It's a January, this happened in November. In January 23, I realized that in the dream, by making me press his feet and left leg, with the feet and left leg, Guruji had averted something major. Though I had to go through the pain, but which also ensured that I was confined inside my home, except for 2-3 visits, for tests and all that. His ways are unique. But at the heart of all is always our welfare. It's always the welfare of the Sangat. Guruji loves his Sangat. There's just unconditional love. As I said earlier, Guruji makes his presence felt in various ways, through darshan, through sighting of peacock, dream darshans. Peacock was also a symbol of spiritual awakening, a butterfly, an eagle, who I sighted at on the 4th floor 2 days prior, when I got admitted for my heart surgery, which again was due to a rare occurrence of a drop of which might have come out when chemoport was put, and which went and settled inside the heart on the valve in the left ventricle. And so this eagle came and sat outside my window. It's a very rare thing for an eagle to come. And the way it was looking at me continuously, and very much diagonally in my sight, and came the next day and the next day, 3 days in a row. And it's only later through another satsang, which I heard during COVID times. This was 2018 that I'm talking of, over this eagle episode. I heard from another satsang, Sangat, during COVID time. I think that Sangat had recently gone from Punjab to Canada and was narrating something similar and saying that it's a symbol of, or brings resilience, fortitude, and it's good luck. So the Guruji has different ways. And this is the first time actually I'd heard anything to do with eagle. But I knew at that instant also, I knew that this is something special, because eagles are not going to sit there and keep looking at me for minutes, 15, 20 minutes, then come the next day again, because my surgery got postponed by a day, which was in a way good, because my children could reach. And came the day I moved back into the room. That was after the surgery. I was in ICU, then CCU. And there's another. Guruji is always around. There's the ways of him to tell you so many, to just make you feel that he's around you, feel his presence. And Guruji, used to say, Guruji, Guruji kar den. Guruji di nahi karte. Sangat, Guruji, Guruji, Jai Guruji, ye wo, but they'll not do what Guruji wants us to do. We also have to be good devotee, right? And Guruji, it's so simple. Guruji used to say, keep it simple. He used to say, "Mera ek baar satsang bhi karna hai. Just keep my sarup, light a diya, play Guruji ke time ke blessed shabad, chai बनाइए,
एक मीठा, if you can. सभी कुछ तो बना ही सकते हैं. Everybody can make it. It's so simple. Even if you can't make langar, you can do this. Main thing is Guruji sees your intent, your feelings, your bhav, आपकी नीयत. नीयत पे बहुत महत्व है. Intention is very important. It doesn't matter to Guruji whether you keep 100 flowers, 500 flowers, 1 flower. It does not matter to him. He'll just see your feelings, your emotions, your purity of your intent. Keep it simple and from the heart. That's what matters the most. Guruji used to say, Gupta Dan, Gupta Paat, Gupta Seva. ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि आपके घर हर हफ्ते सत्संग होता है या हर महीने होता है और whatever. No need. What has to reach will reach. सबके पास अनगिनत सत्संग हैं, experiences हैं, all of us. मतलब गुरु जी की बात भी तो माननी है ना. That is also so important. We have to be a good devotee. Stay in silence, no socializing, no mobile. Watch पे भी नहीं देखना. Now these days, your watch are also synced, so you can know who's calling, what message is coming, everything on your watch. So Sangat, don't try to act smart, especially in Guruji's darbar. हाँ, मोबाइल नहीं ऑन कर रहे, बट फोन पे तो, वो वॉच पे तो देख रहे हैं ना. गुरुजी तो सब देख रहे हैं. We cannot. We can deceive ourselves. We can do anything, but not Guruji. And प्यार करिए गुरुजी को, दिल से करिए. गुरुजी का एक शब्द, ये शब्द also are so divine. Look at the सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, संगतां दे कारज आप खलोया, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे. You can connect immediately to these. They give so much peace. All Shabad do. But somehow for me, these three resonate a lot. And there was a very beautiful line in this book, Fakir. Guruji also mentioned it once. It says, the one who makes thunder roar also hears a butterfly's sigh. That is our Guruji. Mahashiv, Rab. हम actually, गुरुजी कह के बहुत सीमित कर देते हैं उनको. We try to humanize him, but that's not true. Guru ek tattva hai. It's Vishal, Virat, it's you. This Guruji is, the connotations being what it is, how Guruji, the word is used in these times. We are, I think we somewhere are diluting it the way it is. And, Guruji ko कंबल चढ़ाना है, सर्दी होगी. What is all this? कैलाश में रहने वाले गुरुजी, उनको ठंड लगेगी. महाशिव, ये सब नहीं. वहमों में मत पड़िए. गुरुजी यही सब तो हटाने आए थे. गुरुजी नहीं कहते सी वो बिल्ली रास्ता कट गई थे, कि बुक में भी है, गुरु वड्डा की बिल्ली. जय गुरुजी बोलो एंड एवरीथिंग. नो नीड टू काउंट. जैसे गुरुजी कहते थे माला नहीं जपनी चाहिए, ईगो आता है. नेवर काउंट how many times you do jap. Same way, you shouldn't count how many times you're going to बड़े मंदिर. 16 बार जाऊंगी, 7 बार जाऊंगी, इतने दिन जाऊंगी, ये डे जाऊंगी, मंडे और थर्सडे और whatever. Don't do that. It serves no purpose. It really telling you, it serves no purpose. And when we do these kind of things, हम अपना ही नुकसान करते हैं. It doesn't benefit. Guruji, यही तो, that is it.
यही तो गुरुजी कहते हैं, यू हैव टू लिसन। आप जय गुरुजी करने का क्या फायदा अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे। गुरुजी डिडंट वांट के व्रत नहीं रखना। So, these things we have to follow. It's a totally different premise and a different way than other mandirs and the other beliefs. So, and Guruji ने जो format बनाया है, keeping Om and Ek Omkar, जो format बनाया है, we must follow that. We must follow what was being done in Empire State, what is now being done in Bade Mandir. Follow that. Why are we trying to do other things? Don't get smarter. We can't be smarter. जो गुरु जी के उससे तो हम उसको बेटर तो कर ही नहीं सकते ना। I mean, हम गड़बड़ी करेंगे, बेटर तो कुछ नहीं करेंगे। Just चाय प्रसाद. There's no need for snacks with it. कभी नहीं। Just चाय प्रसाद, simple langar, focus on Guruji and not on the other tamjam or decoration. So we have to get our perspective right. That is very important. And the more, I think, the more we do mantra jap or and believe in this Gupt Seva, Gupt Dan, Gupt Jap, the more our perspective will also change. I will like to share one satsang. I was wondering whether I should. This is, I was telling, yes, I must finish that first, about Fakir. Sorry, I digressed a little bit. That book explains this concept of intent. Why are you doing charity? What is the reason for you to do charity? What is the reason for you for holding a prayer meeting, a satsang? It's very well explained, very well in this book, Fakir. And the second book, part 2, Fakir, the journey continues. And I think there is another one, third one, and that is the journey within. It is another good books to read if one can, after, of course, Autobiography of a Yogi. And and after Fakir, I think one should read Laws of Spiritual World. It should be in that order, I think. Because the understanding has to be right. Because if something is understood incorrectly, it can do damage. Sangati, Guruji, this was in 21, Janamashtami. I tell you another way that I got message. There's so many different ways one gets messages, but this was something very unique, different. In 21, on Janamashtami, we'd gone to Bade Mandir, and still the mandir had not opened. It had fleetingly opened, then closed again because of all the corona and all the COVID, Delta wave, everything. So, and in fact, even they were not letting you get out of the car. Sinke car mein baith ke, dur se matha tek lo. So I had done that. I just rolled down the window. And after saying my prayer, this one young cow, few months old, definitely less than a year old, a young cow, just put the full head in the car and just kept looking. And beautiful eyes, I didn't know what to do. I just started saying mantra jap. I didn't have anything. I didn't have grass, anything that I could give. So I just did that. And after a few minutes, I just said, Jai Guruji, ab aap jaiye. And the cow went. Came home. And that morning I done puja. And on some special occasions, Tihar, I do this tilak to Guruji. So that day I had done tilak, and I came home just to kind of thank Guruji that on Janmashtami the cow had come. I took it as a blessing, and to thank him, and also to understand a little more deeply what this was all about.
And as I looked up on Guruji's swarup at the forehead where I had put the tilak, that whole thing had changed into toddler Krishnji, so clear. Never seen such a clear image in tilak. So clear. It's a very popular kind of a photograph also of Krishnji, Bal Gopal Krishnji, where his head is tilted on one side and there's a more punk on the forehead. And even that could, there was like a feathery thing. You could make out it is something. Instinctively, this thought came when I was in front of, and my daughter-in-law is expecting. I said, okay. And sure enough, next day I get a call telling me the good news. In ours, we keep it to ourselves for the first 3 months. And so it was just the beginning. And so they just got the confirmation, it's called. And then, and it's very strange, through her pregnancy in January 22. Yeah, baby was born March. Yeah, January 22. There was some occasion, I think Lodi. On Lodi it was. I had put at by afternoon. In the morning I'd done puja with tilak, and by afternoon that I don't know for what reason, maybe to switch on the light or something. I don't know. And it caught my eye, and as I went nearer, complete figure of Shivji doing in the Tandav pose. I said, oh my God, ye kya ho gaya? It's something, not quite, not quite. I don't know, instinctively felt something kuch theek nahi ho raha hai. And by that early evening, I got a call from my son. No, next day, I got a call from my son. But by night that day, that whole tilak had changed into an open hand. जैसे कोई blessing दे रहा होता है ना. And I knew जो भी है, सब ठीक हो गया. Very worried. Called कि should just come back, and the doctors are saying the growth. The doctors don't do it over there in USA. Mostly the head nurse or whatever is assigned to do these things. And the growth is not how it should be. I said, don't worry. Kuch nahi. All okay. Just make Jal Prashad. He knows how to do that. I said, you all have Jal Prashad. Give it to her. And if you can, rub a little on the tummy. That's it. Kuch nahi hoga. Sab theek hoga. He said, we have called us again the next day. So and sure enough, next day they went and they realized the doctor was very apologetic, very thing, because she had also realized, she was concerned, and she had in fact told my daughter-in-law to get on complete bed rest and all that. And when they did, and she said, this time I'm going to do it. And that's when they realized that it was a technical error and some digit they had not written clearly. And that's where the problem. There was nothing, everything was fine. Jo bhi tha, with Guruji's grace, that all been averted. And Shukrana, Anantam Shukrana Guruji. And in March, my grandson was born. So there are so many ways. It's a question of message pakadna aana chahiye. Message samajhna. The first thought that comes in your head is always the right thought. Sangaji, I think I shall pause here. Another time, there are many satsangs experiences that I have to share. But today I felt I should share these. I have shared earlier on this platform and others. Another time, if given an opportunity, I will definitely share. Thank you so much, Sangaji, for listening. Koi bhi bhul chuk ho, maaf kariye. Any mistake, please forgive me. Thank you, Vasan uncle and multilingual team.
You all are doing a remarkable job. Thank you so much for this opportunity and this blessing. कहंदे सत्संग सुनान वाले दा भी भला ते सुनन वाले दा भी भला. I am taking my blessings. Thank you so much for this. And above all, जी सोनिया आंटी जी, thank you, Guruji Maharaj. Anantam, Anantam Shukrana, Guruji. Jai Guruji. Thank you, Virat, सत्संग Uncle. जी, सत्संग गुरुजी करा रहे हैं, मौका वो दे रहे हैं। बस ये जैसे एक शब्द में है कि एक कोई लंगड़ा होता है संगत का, वो दही लेके जा रहा होता है, तो कोई उसको जो है ना लंगड़ी मार देता है, दही गिर जाती है। उधर गुरु इंतजार कर रहे हैं कि वो दही आएगी तो खाना खाएंगे। वो जब वो पहुंचता है तो वो बोलते पूछते हैं कि देर कैसे हुई। कहे जी महाराज ऐसे से बात है, एक ने जो है ना वो दही गिरा दी थी, और वो कह रहा है तेरा गुरु इतना पहुंचा हुआ है तू, लेकिन उसको तेरा पाँव नहीं ठीक कर सकता। तो गुरु ने उसको एक किसी उसके पास में भेज दिया, मुसलमान के पास में, कि जा उसके पास चला जा। वहां पहुंचता है वो, पहुंच के कहता है कि जी ऐसे ऐसे मेरे गुरु ने भेजा है आपके पास मेरी टांग ठीक करने के लिए। वो कहने लगे तुम्हारे गुरु तो पहले ही पहुंचे हुए हैं, वो तो सब कुछ करने में समर्थ है, तो मेरे पास क्यों भेजा है। अब उसकी समझ में नहीं आया, उन्होंने तो गुरु की आज्ञा मानी, वहां तक पहुंच गया। वो जब थोड़ी देर तक चुप रहा, उसके बाद वो मुसलमान जो है ना वो एकदम एक डंडा लेके उठा और उसके पीछे भाग लिया। वो भाग लिया, उसने भी नहीं सोचा कि उसकी टांग टूटी है या कैसी है, वो भाग लिया आगे। जब कुछ दूर भागा उसके बाद उसको समझ में आया कि उसकी तो दोनों दूसरी जो टूटी हुई टांग है वो भी ठीक है और अच्छे से दौड़ रहा है। वापिस आकर उसने उसको बोला जी आपका शुक्रिया कि भाई आपने जो है ना मेरी टांग ठीक कर दी। तेरा टांग तो तेरे गुरु ने ही ठीक करी है भाई, मेरे को तो नाम कराना था, मेरा नाम कराना था, इसलिए कि महाराज करने वाले तो सब कुछ है, उन्हें किसी भी प्रतीक की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरु जी को सब कुछ वो करने में समर्थ है। बस वो है कि किसको वो करा सकते हैं। गुरु जी ने सत्संग करने का एक मौका दिया, अपनी संगत में भरोसा बने, और वो भी उस लाइन में वो लगन लगे। क्योंकि ये सत्य है कि हम अक्सर मजबूरी में किसी दर पे जाते हैं, किसी को मानने लगते हैं। वो एक मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई समस्या है, हमारी कोई हेल्थ इशू है, हमारे कोई फाइनेंशियल इशू है, हमारी पारिवारिक इशू है, लेकिन क्या वो गुरु जी की मजबूरी में मानी हुई चीज, क्योंकि वो हम हमारे दिल से नहीं हुआ। लेकिन जब वो ये है कि गुरु जी को मानना तो हमारी मजबूरी हो सकती है, कि कोई किसी मजबूरी को लेके गुरु जी के दर पे आया और गुरु जी को मानना शुरू कर दिया। पर सच ये है कि जब गुरुजी की मानने लगेंगे, गुरुजी को मानने की संगत तो बहुत इकट्ठी हो रही है, लेकिन गुरुजी की मानने लगेंगे तो असल संगत वहां से शुरू होती है। संगत का जो वो कायदा है वो वहां से शुरू होगा जहां गुरुजी की मानने लगे। होता यह है कि हम जो चाहते हैं वो उनसे कराना चाहते हैं, जो गुरुजी महाराज हमसे चाहते हैं वो करना नहीं चाहते, बल्कि जो हम चाहते हैं वो उनसे कराना चाहते हैं, कि वो हमारे कहे अनुसार चले, जैसा हम चाहें वैसा वो हमारे हिसाब से चले। जबकि सरेंडर का मतलब है कि जैसा महाराज कहते हैं, जो गुरुजी जैसा वो करते हैं उसके हिसाब से चला जाए। और मैं तो जब गुरुजी के यहाँ जाने लगा, लॉकेट मिलते थे, लॉकेट मैंने गले में डालना शुरू किया। पहले उसमें धागे में डालता था, वो सेवा करते हुए खुल जाया करता था, अक्सर कितने ही अच्छे से गांठ मारो वो खुल जाता था। फिर मैंने कही ये तो हमेशा का परमानेंट हो गया कि गले में गुरुजी का लॉकेट तो रहना ही रहना है। तो मैं एक बहुत मोटी चांदी की चेन ले आया और उसको डाल के उसमें डाल के गले में डालने लगा। एक बार बड़े मंदिर ही सेवा कर रहा था, मेरे साथ जो सेवा आंटी करते थे वो अंदर से आए बड़े हॉल से, और आके मेरे पास बोले कि अंकल वो गुरुजी का लॉकेट दे दो। तो जो मेरे गले में था उसके अलावा मेरे पास कोई लॉकेट नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मेरे पास तो लॉकेट नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी ने बोला कि आपके गले में जो है ना वो लॉकेट चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि मेरे गले से चाहिए, तो मैंने उठा के वो लॉकेट उन आंटी को दे दिया। उन्होंने जिसको भी गुरुजी ने दिलाना हो उसको दिला दिया। बाद में उन्होंने आके बताया कि कोई बच्चा था जो अनकॉन्शियस स्टेज में उसको लेके आए थे वहां, लेकिन लॉकेट गुरुजी का जाने के बाद में वो उसको चाय प्रसाद भी उसने उसने थोड़ा ग्रहण किया, और वो थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस होके यहाँ से गया। यानी कि गुरुजी जानते हैं उसके बारे में। तो मेरे को दिमाग में ये था कि जब भी कभी, ये तो रोज मिलते हैं लॉकेट गुरुजी के, तो कभी भी मिलेगा फिर डाल लूंगा। फिर लॉकेट मिला, फिर मैंने गले में डाल लिया। उसी वीक में या नेक्स्ट वीक में एक आंटी फिर आई। एक दिन मैं सेवा कर रहा था कि वो आंटी बोली आके कि अंकल वो गुरुजी का लॉकेट चाहिए। तो मैं सेवा करते करते मैंने बोला, मैंने कि मेरे पास तो नहीं है। और इतने में जैसे मैं झुका तो वो जो मोटी चेन की वजह से वो जो है ना मेरे गले से बाहर आ गया।
तो आंटी ने इशारा किया मेरे को कि ये रहा लॉकेट। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैंने तो वो लॉकेट जो है ना उनको उनको दे दिया चुपचाप, बिना किसी उसके। फिर मेरा था ये कि फिर मिलेगा फिर डाल लूंगा। तो तीसरी बार जब मैंने वो कोशिश की, कि 2 बार गुरुजी ने उतरवा दिया, उसके बाद तीसरी बार जब कोशिश की तो गुरुजी ने एक ही संदेश दिया कि मेरे को ये लॉकेट, पेन, ये मोर पंख, तितली, इन सब चीजों में ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दे। वो दिन है और आज का दिन है। वो जो भाव था कि भी लॉकेट बिना जो है ना मैं संगत में शामिल ही नहीं होऊंगा, जब तक लॉकेट गले में नहीं होगा, या जब तक गुरुजी का कोई ऐसी कोई पहचान मेरे शरीर के साथ या मेरे उसके साथ नहीं होगी, तब तक जो है ना मैं मेरे को कोई गुरुजी की संगत ही नहीं मानेगा। क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वो दुनिया ही देखती है। लेकिन गुरु को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वो गुरु देखें। तो यही है कि दुनिया को तो हम दिखाते दिखाते सारी जिंदगी बीत गई, पर अब वो दिखाएं जो गुरुजी महाराज देखना चाहते हैं, जो हमारे अंदर बदलाव बदलाव चाहते हैं गुरुजी, जो हमसे कराना चाहते हैं, जो वो देने आए थे, उसके लिए हम अपनी पात्रता को बढ़ा पाए। बस इतना ही हमें करना है। जो अभी मेहता आंटी ने जो बताया है, उसमें यही है कि दिखावा जो है ना दुनिया के लिए तो हो सकता है, पर महाराज के लिए नहीं। ऐसे ही बड़े मंदिर में जब गुरु जी का आने का वो होता था, कई दफे तो कई संगत ऐसी थी जो कभी झुकती भी नहीं थी, लेकिन पता लगा गुरु जी आ रहे हैं तो दूसरा कोई पोछा लगा रहा है, उसके हाथ से पोछा लेके जो है ना उसको वो लगाना शुरू कर देते। तो हम देखते थे तो हम यही हंसते थे कि क्या गुरु जी को नहीं पता कि उसका किसका क्या भाव है। क्योंकि उन तक जो पहुंचने की चीज है वो तो आपकी श्रद्धा, आस्था और भाव ही तो है। आपको भरोसा ही तो उनको उनसे जोड़ पाएगा। बाकी दुनियावी कोई भी चीज, कितनी कितना ही बड़ा दरबार लगा लो, कितने ही अच्छा स्वरूप बड़ा वो कर लो, सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आपका भाव ही नहीं है, भाव के अभाव में सब कुछ बेकार है। और भाव आपका जग गया तो ये है, और शब्दों में ही बिल्कुल क्लियर गुरुजी ने हर सवाल के जवाब हमारे शब्दों में दे रखा है। बस वो कहते हैं सुन लो। अब हम ढंग से सुन लेंगे तो समझ में भी आना शुरू हो जाएगा, और समझ में आएगा तो हमारे से गलतियां होनी कम हो जाएंगी, या जो गलती की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जिंदगी जो है ना वो उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी जहां गुरु जी हमें चाहते हैं। आज के लिए इतना है। आप सबका जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, आप सबका जो है ना धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि संगत परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें कोई ऐसा वजूद नहीं है जो आपको बिखराव कर सके। जुड़ाव करने के लिए तो बहुत कुछ है गुरु जी की कृपा से, लेकिन आपको बिखराव करने के लिए कुछ नहीं। बस बशर्ते कि सबका ध्यान और सबके ध्यान में गुरु जी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट सोनिया मेहता आंटी जी फॉर ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी यू हैव शेयर्ड विद गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट बिलचरम अंकल जी अपने इंस्पिरेशन मैसेजेस के लिए। गुरु संगत का गुरु संगत आप सबका आभारी है। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।